बिया जाफर शेख, चोचा सकाड़ा इरफान चोचा एंड रिजवान शेख, रोलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी एंड मनसब मुल्ला जी जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक बैग स्पॉन्सर की हुई है, सिमना प्लांट मैन्युफैक्चर आसिफ शेख जी जो वाइस प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी सेल के, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। A1 चिकन सेंटर आतिक भाई, अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर जी, उसी के साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं रुपेश जाधव दवले गांव सिटी ओपन क्रिकेट BC4 का थर्ड प्राइज जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, काशिफ मुरुमकर ग्रामीण क्रिकेट BCA का थर्ड प्राइज जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है तलोली गांव से, बिस्मिल्ला मोटर्स रिजवान फकी जिन्होंने ORS जूस सारे प्लेयर्स के लिए स्पॉन्सर किया हुआ है, विटामिन C से भरपूर ORS जूस, उसी के साथ साथ महेश सुदाम राउत सिटी क्रिकेट फोर्थ प्राइज जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, सुजीत नामदेव पाटिल खंडवल गांव जिन्होंने BCA ग्रामीण सेकेंड प्राइज स्पॉन्सर किया हुआ है, उसी के साथ साथ हम शुक्रगुजार है सिद्धि इवेंट्स एंड शेरू कैटरर्स के। धन्यवाद रेशमा मयेकर। आइए अब हमारे मेहमानों को मैं बुलाना चाहूँगा। अयान पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं निहाल शेख साहब, इसके अलावा आसिफ शेख साहब, नईम शेख साहब और तंजीम गोरेकर, इनसे गुजारिश करूँगा कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे साथ आपको इस वक्त बी क्रीमी और ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स में हाजिर होना है। गुजारिश है हमारे तमाम मेहमानों से कि कृपया करके हमारे साथ प्रेजेंटेशन बॉक्स में ज्वाइन हो जाइए। आपके शुभ हाथों से दस्ते मुबारक से हम ये सारे प्राइजेस देने वाले हैं। नईम शेख और तंजीम गोरेकर, आपसे ये गुजारिश है कि आपको हमारे साथ प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। आइए नईम शेख साहब, निहाल शेख साहब और आसिफ शेख साहब और हमारे कार्यकर्ता अयान पटेल बहुत ही सुपर्ब काम कर रहे हैं। उमान, अयान, जो भी हमारे युवा कार्यकर्ता है, तमाम ये टीनेजर्स ने बाली ट्रॉफ़ी में 100% देने का प्रयास किया है। तो शाम का पहला अवार्ड सुपर 4 अवार्ड और इसको स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर AA भारत गैस ने। जानते हैं सुपर 4। सुपर 4 ऑफ द मैच गोस टू बिलाल शेख जिसके बल्ले से आए हैं शानदार 7-7 बाली ट्रॉफी चौकार। क्या बात है बिलाल। बिलाल शेख बहुत ज़बरदस्त मिजाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनको किंग ऑफ क्रिकेट कहा जाता है भिवंडी का। और ये जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर द्वारा AA भारत गैस का तोहफा बिलाल आपका हुआ। आइए अब सुपर 6 की तरफ हम चलते हैं, जहां पर तारिक रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा एक खूबसूरत कलाई की घड़ी ये प्रायोजित की गई है। जानते हैं रेशमा से कौन है सुपर 6 ऑफ द मैच। सुपर 6 ऑफ द मैच गोस टू वन मोर टाइम जिनके बल्ले से आए हैं शानदार 7 बाली ट्रॉफी षटकार बिलाल शेख। जोरदार तालियां हो जाए। आइए बिलाल रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई ये खूबसूरत कलाई की घड़ी आसिफ शेख साहब के हाथों आपको इनायत की जा रही है। आपके घड़ियों के कलेक्शन में एक घड़ी आज और बढ़ गई है और ये हर घड़ी आपको तारिक रईस साहब की याद भी दिलाएगी। अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। रेशमा, एक चीज़ है, बाली ट्रॉफी में ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट को जो रैप किया गया है, ये जो कलर है ना, ये छोटे बच्चे को तो छोड़ो, बड़े बड़े क्रिकेटर की आंख में भी चमक ला दे ऐसे कलर में ये तोहफे को पैक किया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। सर मुझे ना हमेशा याद आता है जब भिवंडी प्रीमियर लीग हम कर रहे थे, तभी आपने सबसे पहले मैन ऑफ द मैच के समय पर मुझे कहा था कि रेशमा यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स होते हैं कि हम बोलते बोलते और प्लेयर्स लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन गिफ्ट्स कभी कम नहीं होते। क्या बात है। आइए जानते हैं रेशमा से मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच गोस टू, शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, जिन्होंने 80 रन की क्या धुआंधार पारी के लिए और साथ ही बॉलिंग करते समय 3 विकेट्स भी लिए हैं। वन मोर टाइम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बिलाल शेख। आइए बिलाल शेख, अभिनंदन आपका, एक कंप्लीट क्रिकेटर बिलाल शेख। शुरुआत करेंगे नईम शेख साहब से। जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर AA भारत गैस का ये खूबसूरत बख्शिश आपका हुआ। ये धमाका सिर्फ बाली ट्रॉफी में होता है। तंजीम गोरेकर, इनके
दस्ते मुबारक से आसिफ बोलिंस्कर और जावेद दलवी ए भारत गैस का एक और नायाब तोहफा। निहाल शेख साहब के हाथों, जो समाजवादी पार्टी के लीडर भी है, जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर का ए भारत गैस का एक और तोहफा। आसिफ शेख साहब के हाथों एक और तोहफा ए भारत गैस जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर की देन है। हमारे युवा कार्यकर्ता अयान पटेल के हाथों ताबिर जैरूमी ताज़ा किचन का ये डिस्काउंट वाउचर। अब नईम शेख साहब के हाथों जॉली डिज़ाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर। तंजीम गोरेकर द्वारा डी साकरिया का ट्रेंडिंग बैग डिज़ाइनर मेंस वेडिंग कलेक्शन। अब मैं गुजारिश करूंगा अयान पटेल से एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई ये कैप। अंजुर की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये फ्रूट बास्केट आसिफ शेख साहब के शुभ हाथों से बिलाल को सौंपा जा रहा है। और सबसे आखिर में मार्बल की ट्रॉफी जो एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन ने तैयार की है, जिस पे ए भी लिखा है। बाली ट्रॉफी अलग अलग कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं। निहाल शेख साहब से गुजारिश है कि ये बिलाल को सौंपी जाए। एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन की ये खूबसूरत देन। तो अब मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नईम शेख, तंजीम गोरेकर, निहाल शेख, आसिफ शेख और अयान पटेल। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पेशल गेस्ट। बाली ट्रॉफी 2021 में आपका स्वागत है। सो हियर विथ अस बिलाल शेख। क्या बात है बिलाल, मतलब बैटिंग भी आपको ही करना है, बॉलिंग भी आपको ही करना है, विकेट भी आपको ही लेना है, सब आज मैच में सब काम आपको ही करना था। नहीं, रन बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसकी वजह से मैं बॉलिंग किया। आपके रन ज़्यादा हुए थे इसलिए आपने बॉलिंग भी कर दिया, मतलब नेकी के साथ साथ पूछ-पूछ भी कर ले। हाँ, रन ज़्यादा 100 रन के ऊपर हो गए थे। मैं सोचा एक बार ट्राई करता हूँ, कभी लेफ्टी बैट्समैन आया तो मैं भी बॉलिंग कर सकता हूँ, हिसाब से विकेट चेक कर रहा था किसी। तो ये बाली ट्रॉफी के अगले मैच की तैयारी चल रही थी क्या पिच पर? यस, हम लोग का स्कोर बहुत हो गया था, तो हम लोग अभी ये मैच खेल के आगे की तरफ देख रहे हैं, नेक्स्ट मैच की तरफ। किसको डेडिकेट करना चाहते हैं ये जो आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है? ये मैन ऑफ द मैच मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। क्या बात है बिलाल, बाली ट्रॉफी में हज़ारों रन बनते आ रहे हैं। जो पिच तैयार की गई है वो बल्लेबाजी के लिए कितनी मुफीद आपको नज़र आई? सर, देखा जाए तो विकेट दोनों के लिए बराबर है। बॉल स्पिन भी हो रहा है, बॉल पिचिंग कर रहे हैं तो बॉल निकल भी रहा है, और बैट्समैन के लिए भी अच्छा है कि हिट किए तो बॉल 6 जा रहा है फटक से। और बिलाल, मुझे ऐसा लगता है क्या 2021 आपको एक कंप्लीट क्रिकेटर बना रहा है, क्योंकि हमने आपको विकेट कीपिंग करते हुए देखा, बॉलिंग करते हुए देखा, बैटिंग करते हुआ देखा, कैप्टनशिप करते हुए देखा। अब बिलाल के लिए आगे क्या बचा है? नहीं सर, पहले मैं 5-6 साल पहले बॉलिंग भी करता था, बट अभी का क्रिकेट काफ़ी फास्ट हो चुका है, तो हिसाब से मैं बॉलिंग छोड़ दिया। बाकी जो ऊपर वाला दिया है उस पर पूरी मेहनत कर रहा हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत खुददार क्रिकेटर है बिलाल शेख। बहुत कम बोलते हैं लेकिन मतलब के साथ अच्छा बोलते हैं। तो माउली स्पोर्ट्स आपको हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। सो ये थे हमारे साथ बिलाल शेख, जिन्होंने 80 रन की धुआंधार पारी और 3 विकेट चटकाए हैं। थैंक यू सो मच बिलाल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर मैचेस। चलिए फिर से एक बार चलते हैं हमारे कमेंट्री पैनल के पास। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू हारिस सर, थैंक यू मिस रेशमा मयेकर। मैच चल रहा है इस वक्त सोना देवी टेमगर बनाम गांव देवी ओली के बीच। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई गांव देवी ओली, सोना देवी टेमगर 2 ओवरों का खेल चल रहा है। दूसरी ओवर का स्कोर है इस वक्त 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर सनकी किशन मात्र 0 पर आउट हुए छक्का लगाने के चक्कर में। विवेक इस वक्त 2 चौकों की मदद से 9 रनों पर खेल रहे। नए बल्लेबाज आकाश चौधरी आए बल्लेबाजी के लिए। अक्षय चौधरी आए बल्लेबाजी के लिए, सामना कर रहे हैं इस मर्तबा। बढ़िया गेंद आगे खींचा था बल्लेबाज को, बीट करती हुई पहुंच गई थी गेंद विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। अगदी बरोबर अप्रतिम चेंडू होता आणि पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, एक पाऊल फक्त पुढे टाकला होता फलंदाजाने। इस वक्त हमारे बीच एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर, जो मैन ऑफ द मैच के हमारे कैप के स्पॉन्सर है, टेनिस क्रिकेट बैट के होलसेलर है, उनका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। अजय मुड़ते हुए इस मर्तबा सीधे बल्ले से उड़ा दिया गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं।
कोशिश बढ़िया, कैच छूट गया वहां पर, 2 रन पूरे किए अक्षय ने। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर। हे आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे फटका केला होता सरळ बॅटने डावीन ते ग्राउंड. मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा ही तिथे क्षेत्ररक्षकाने केली होती. एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळाला, पण झेल पकडू शकला नाही. मात्र कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षकाचं. बिल्कुल तारीफ करनी होंगी, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा था, की कोशिश की थी पकड़ने की। इस मरतबा शरीर से दूर ड्राइव किया गेंद को, सफाई से नहीं खेल पाए, 1 रन पूरा किया, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। दूसरे के लिए जा रहे खतरा, लेकिन सुरक्षित पहुंच गए अपने क्रीज में, 2 रन पूरे। धावसंख्या 2 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 16 धावा. ग्रामीण पूलमधील आपण सामना पाहतोय सोनादेवी टेमकर विरुद्ध गावदेवी ओवली या 2 संघामध्ये, ज्यामध्ये नाणेफेक हल्ल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना सोनादेवी टेमकर संघ. यानंतर आपण सिटी पूलमधील सामना पाहणार आहोत विकी स्पोर्ट चाविंद्रा आणि जय म्हसोबा पिंपलास. रूप देखने को तेरा हर दिन सूरज आता है। चाविंद्रा आणि जय म्हसोबा पिंपलास या 2 संघामध्ये दोन्ही संघाचे संघनायक आलेले आहेत. दोन्ही संघनायकांचं हार्दिक स्वागत आहे. सिटी पूलकडे आपण यानंतर वळणार आहोत. मात्र आपण सध्या पाहतोय ग्रामीण पूलमधले सामना गावदेवी ओवली विरुद्ध सोनादेवी टेमकर. गावदेवी ओली आपको फील्डिंग तुरंत सजाना है, समय के मामले में सहयोग करना है। अंपायर आपको वार्न कर रहे हैं, ऑन फील्ड अंपायर। अंपायर शानू कुरैशी और शकील कुट्टी। अल्ताफ बाली सर ने भी चुन चुन कर हर चीज से रंग भरा है बाली ट्रॉफी में। इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया है, फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। मौसम है इसको रुका हुआ है 16 रनों पर। बहती हुई हवाओं के साथ स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी, लेकिन उतना टाइम नहीं कर पाए थे। जतिन मुड़ते हुए इस मर्तबा गेंद को ड्राइव कर दिया ऑन साइड पर। थोड़ा सा थ्रम्बल, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन पलट गए अपने क्रीज में। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, इस 1 रन से स्कोर 17 रनों पर पहुंचा है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। 17 धावा धावफलकावर झलकल्या गेलेल्या त्याने तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. तिसरं षटक हाताळतोय जतीन पाटील गावदेवी ओवली या संघाकडून. बहुत बड़ा बेनिफिट रहा था श्याम चौधरी और सन की किशन मात्रे का विकेट ओली के लिए। इस मर्तबा खड़े खड़े स्विंग करना चाहते थे, शरीर से दूर थी गेंद, लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में।
शुक्रिया नबील, शुक्रिया शुभा धुमाल, कुणाल दाते जुड़ते हुए। इस मरतबा ड्राइव करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन पर 1 रन बनता हुआ स्कोर में। तीसरा ओवर चल रहा है। अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से विकी स्पोर्ट चामिंद्रा बनाम जय मसोबा पिंपलास। जतिन फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है हवा में, लेकिन नहीं पहुंच पाए फील्डर। देखिए शाम का समय कुणाल, ये वो समय रहता है जब रन बहुत तेज बनते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी रोक लगी हुई है। 20 रन है, 3 विकेट। खूप चांगला उल्लेख तुम्ही केला की रात्रीच्या वेळेला भरपूर वेगाने रन बनतात, परंतु इथे आता तसा स्ट्रोक आलाय अगदी कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने, जसा आपण उल्लेख केला तसा स्ट्रोक बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, बाली ट्रॉफी षटकार। प्रेमियों को प्यार तो हुआ है सिर्फ बाली ट्रॉफी से। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 26, विकेट गिरी है 3। डेथ ओवर का आना बाकी है। और कुणाल, अगर दिन की रोशनी के मैच का हम कंसर्न करें तो फिर ये टोटल अच्छा नहीं लग रहा है सोना देवी टेमघर का। अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केलाय, यापेक्षा जास्त रन करणं गरजेचं आहे। दिल मागे मोर, आणि रन तर आता कराव्या लागतील। ज्या पद्धतीने गावदेवी ओळीने बॉलिंग केली आहे, खरोखर चांगली बॉलिंग त्यांच्याकडून। लास्ट बॉलला षटकार आल्याने हा या इनिंगचा पहिला षटकार होता, जो 18व्या बॉलला आलाय। प्रेषित आलाय बॉलिंग करण्यासाठी। देखना है कि प्रेषित के सामने दोनों बल्लेबाज, हालांकि आखिरी शॉट कमाल का था बैट्समैन अक्षय चौधरी का। स्टैंड एंड डिलीवर फेंक दिया था गेंद को ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में। आज के जो मैचेस है उनकी रूपरेखा मैं आपको बताता चलूँ। अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से विकी चामिंद्रा और जय मसोबा पिंपलास। उसके बाद 40+ से खारबांव और न्यू मिलन पाएगांव। इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, आसमान में गेंद है, फील्डर नहीं पहुंच पाए, डीप से आए थे। 2 रन बनाए बैट्समैन ने। तीसरे की कॉल है और थ्रो बहुत खराब, चौथे के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस मरतबा 3 रन के बाद बैट्समैन रन आउट। मुकाबला शाम 7 बजे आप देखने जा रहे हैं। एसके इंटरप्राइजेस शुमाइल सुसेफ एम टीम और एनजे 11 के बीच में। 11वां मुकाबला 8 बजे गिरामीन से घुड़सई ये और जय हनुमान पोगांव। व्हाट अ मैच। तुषार सिल्के बनाम सूरज केनी। उसके बाद आप देखेंगे सिटी से हमजा और जॉय कुमार, करसन फुलोरे फैम टीम और असरार अंसारी फैम टीम। 10 बजे 13वां मुकाबला गिरामीन से जय हनुमान खोनी और बालाजी स्पोर्ट्स सरोली। और आखिरी मुकाबला गिरामीन से क्यूनी स्पोर्ट और वडूनगर 11। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव फ्रंट फुट पे कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑन, थोड़ा स्ट्रैटिश था, 1 रन बनता हुआ स्कोर में।
30 रन हुए हैं सोना देवी टेमगर के। 5 अर्धशतक सिटी फॉर्मेट में लगे और ग्रामीण में एक अर्धशतक लगाया था खोनी के दक्षत ने। साथ ही साथ ग्रामीण क्रिकेट में 4 हैट्रिक हुए और सिटी क्रिकेट में मात्र 1 हैट्रिक सिराज अंजुमन लेजेंड्स के। वो गति परिवर्तन लेकिन लाइन सही नहीं, वाइड। इकतीस रन गेंदबाजी करे प्रशित, सामना करे बैट्समैन आवेश पाटिल। अंधाधुंध बल्ला चला दिया, फिर वाइड। बत्तीस रन। आज भी 14 मैचेस है हमारे शेड्यूल में और कल भी 14 मैचेस है। इस मरतबा कंट्रोल शॉट कुणाल दाते मेरे साथ हैं और डे आफ्टर टुमारो देखना ना भूलिए बाली ट्रॉफी में वो घमसान जो देर तक आप याद रखेंगे। सारे हिंदुस्तान के सितारे बाली में। ओपन क्रिकेट के रति महारथी को देखना ना भूलिए 23 और 24 तारीख को। वेलकम राजन पाटिल, अरशद चौधरी। इस मरतबा छोड़ दिया, वहाँ पर मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, डेथ ओव्हर में ये नहीं करना चाहिए। अगदी बरोबर आहे, कारण या अगोदरचे बॉल वाईड बॉल टाकले आणि त्याच लाईनवरून आता बॉल कुठेतरी आतमध्ये आणला, त्यामुळे बॅट्समन थोडासा द्विधा मनस्थितीमध्ये होता। प्रशित निकल के मारा है गेंद को लॉन्ग ऑन पे और गेंद 6 रनों के लिए। नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन को जाकर कहा, कभी से गेंदे टिप्पा खा के शरारत कर रही है, गेंद के पिच तक जाके उछाल दिया। टर्न होने से पहले ही गेंद को फेंक दिया, फिर चहलकदमी की। इस मर्तबा अपर कट की कोशिश, गेंद बल्ले का किस लेती हुई शॉर्ट थर्डमैन पर। 40 रन बने और 41 रनों की चुनौती गावदेवी ओली के सामने रखी है सोना देवी टेमगर ने। आइए सुहानी शाम में एक बड़ा मुकाबला सिटी क्रिकेट से विकी स्पोर्ट चाविंद्रा बनाम जय मसोबा पिंपलास, हेमंत पाटिल और आतिश पाटिल इस वक्त 5 फॉर्चून टॉस बॉक्स में। हम आपको लिए चलते हैं हरीश पंड्या और रेशमा मयकर के पास। धन्यवाद सिद्दीक बाबीजी। मित्रांनो, आपण बघत आहात बाली ट्रॉफी 2021, आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स क्लब, आणि ही स्पर्धा 14 तारखेपासून खेळली जाते स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी येथे। आता जो सामना होणार आहे तो विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा आणि जय मसोबा पिंपळास हे 2 बलाढ्य टीममध्ये, आणि आपण उभे आहोत 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्स टॉस बॉक्समध्ये। त्याचे पुरस्कर्ते आहेत मुशीर नाचन, सादात पटेल आणि विष्णू चंदे। मी आपले मॅच रेफरी अझीम अब्दुल्ले यांना विनंती करणार आहे, आपण आमच्यासोबत जुळायचं आहे। नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी अयान पटेल यांना विनंती आहे, त्यांनी यायचं आहे। एक टीनेजर मुलगा आणि ही इज अ कॉम्प्लान बॉय, ग्रोईंग बॉय, परंतु प्रेझेंटेशनमध्ये सुपर्ब कोऑर्डिनेशन, म्हणजे गिफ्ट्स आणायचे असतील, कोऑर्डिनेशन, पाणी म्हणा, आई थिंक ही हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर। अयान भाई, आप छोटी उम्र में बहुत इंशाल्लाह ताला तरक्की करें और पढ़ाई में भी आगे जाएं और अपने जीवन में भी आगे जाएं, ऐसी हमारी ओर से आपको बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात है। आइए चलते टॉस की तरफ। दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना कळले कॉईनच्या दोन्ही साईडचे। अयांग पटेल, तुमच्या शुभ हस्ते हा कॉईन होणार आहे। द यंग डॅशिंग हँडसम अयांग।
जय मसोबा यांचा कॉल आहे. AB इज अ कॉल अँड इट्स अ ZP यानी की विकी स्पोर्ट्स यांनी हा टॉस जिंकलेला आहे. अयंग पटेल यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस कॉइन. रॉलेक्स मेडिकेअरचे फहाद दलवी मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली ही किटबॅग आणि जॉली डिझायनरचा 20% डिस्काउंट वाउचर. थँक्यू सो मच अयंग पटेल. कॉंग्रॅच्युलेशन्स विकी स्पोर्ट्स. बघा बाली ट्रॉफीमध्ये काय असतं माहिती आहे, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत तुम्ही फक्त गिफ्ट्स आणि गिफ्ट्स बघता. जसं टॉस जिंकल्यानंतर 2-2, 3-3 गिफ्ट्स. त्यामधलं एक गिफ्ट जे आहे जॉली डिझायनरचं, ज्याच्यामध्ये 20% डिस्काउंट आहे. तर जर तुमच्या घरी लग्न असेल किंवा तुमच्या घरी तुमचं लग्न असेल, झालं नसेल तर, किंवा तुमच्या घरी तुमच्या बहिणीचं किंवा आत्याचं, मावशीचं, कोणाचंही लग्न असेल, आजूबाजूला लग्न असेल, तर नक्की विजिट करा जॉली डिझायनर. आता एक स्टेप पार पाडलेली आहे, तुम्ही टॉस जिंकलेला आहात. विकी स्पोर्ट्स टॉस जिंकून काय निर्णय घेणार आहे? फिल्डिंग करणार. फील्ड फर्स्ट. बघा संध्याकाळचा सत्र आहे आणि त्यामध्ये फिल्डिंग करताना काय वाटतंय समोरच्या टीम्सला, जय मसोबा टीमला किती रन्स पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 40-45 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. 40-45. कोविडचं जे हे सावट आहे त्यामुळे आपण ऑडियन्सला तर घेतलेलं नाही आहे, तरीसुद्धा बाली ट्रॉफी याची देही याचा डोळा असा सोहळा चालू आहे. काय सांगाल बाली ट्रॉफी 2021 बद्दल? प्रत्येक वर्षी टुर्नामेंट भरवली जाते आणि या टुर्नामेंटमध्ये खेळण्याचा भाग आम्हाला मिळतो, ते आम्ही खूप एन्जॉय करतो आणि बाली साहेबांना त्यांचा शुक्रिया करतो मी. नक्कीच धन्यवाद. जय मसोबा बिपास, तुम्ही तुमचा दुसरा सामना खेळत आहात. तर पहिला सामना आणि दुसरा सामनामध्ये जो वेळ मिळाला त्यात संघाने कशी तयारी केली? तयारी तर भरपूर झालेली आहे. समोरची टीम पण चांगली आहे. बघू. आणि पहिल्या सामनाला जी टीम होती तीच ठेवणार आहात का काही बदल घडून आणणार आहात आज प्लेइंग 11मध्ये? एखादा चेंज होईल. तर धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल. So news from the toss box, Vicky Sports won the toss and choose to field first. दोन्ही संघांना आमच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा. मे द बेस्ट टीम विन. आणि आता पुन्हा वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. खूप खूप धन्यवाद व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर आणि नाको अँकर रेश्मा माईकर. तर ग्रामीण पूलमधील हा सामना आपण पाहतोय सोनादेवी टेमगर विरुद्ध गावदेवी ओवली या दोन संघामध्ये. श्याम चौधरी यावेळी फटका फसलेला आहे चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचतोय. सुरेख झेल आणि फलंदाज फेल. व्हॉट अ कॅच. गेंद बहुत ऊपर चलेगी, लेकिन कमाल का कैच वहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़ते हुए अवेश पाटिल. अगदी बरोबर, कारण अवेश पाटील 30 सर्कलमध्ये उभा होता आणि मागे येऊन मागे पलत जाऊन हा असा झेल पकडणं खूप अवघड असं, आणि मात्र हे अवघड त्यांनी शक्य करून दाखवलेलं आहे. तर पहिला फलंदाज पवन पाटील हा बाद झालेला आहे. नवीन फलंदाज मोनिश येतोय. गावदेवी ओवली संघ 41 लक्षाचा पाठला करतोय, कारण सोनादेवी टेमगर संघाने निर्धारित 4 षटकामध्ये प्रति षटकामध्ये 10.00च्या सरासरीने धावपळ 10 झळकल्या ते 40, आणि प्रतिस्पर्धी संघ गावदेवी ओवली संघासमोर जे लक्ष ठेवलेलं आहे ते 41 धावांचं. श्याम चौधरी व्हीआयपी डायझन करून वळताना यावेळी मात्र चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने वळतोय. ॲक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा, मात्र असफल ठरतोय. जी बिल्कुल बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज सूरज मात्रे ने. डॉट होती हुई ये गेंद, जो टारगेट है वो 41 रनों का टारगेट है ओली के सामने. यावेळी चेंडूला फिरकून दिलेला लॉफ्टेड फटका, भीम टोला वज्र टोला आणि चेंडू सीमारच्या बाहेर गेला. वाजवतो क्या? ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहाँ पर सूरज ने. हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला था, कॉ कॉर्नर के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ इस सिक्सर की मदद से खाता खुलता हुआ. धावसंख्या 6 ने मुसंडी मारते, आणि धावसंख्या आपण पाहतोय
की वेगाने वाढलेले आहे. अर्थात अकाउंट ओपन केलेलं फलंदाज सूरज याने. याला पुन्हा एकदा मोठा फटका और ये भी गेंद जाएगी साजन के घर. सिक्सर लगाते हुए वहां पर सूरज मात्रे, बाहर जाती हुई गेंद को बाहर भेज दिया वहां पर बल्लेबाज सूरज ने. इस सिक्सर की मदद से स्कोर 12 पर पहुंचता हुआ बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर सूरज मात्रे द्वारा. एक सूरज आपण पाहतो आकाशामध्ये थोडासा थंडावलेला आहे. मात्र ग्राउंडमधील गावठी ओवली संघाचा सूरज तलपताना ज्याप्रमाणे 2 फटके त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. बॅक टू बॅक 2 षटकार. तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई गावदेवी ओली को, जहाँ पर सूरज इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे. एक बार फिर से सामना करेंगे श्याम चौधरी. श्याम चौधरी फेसिंग में सूरज मात्रे. याला मात्र कंट्रोल फटका पण पाहतो. मिड विकेटमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होते. चांगलं क्षेत्ररक्षण टीम मिड विकेटला. मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव पूर्ण. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया दौड़ देखने को मिली वहाँ पर. 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर. 2 रनों की मदद से स्कोर 14 पर जा पहुंचा है. पहले ओवर की समाप्ति होती हुई. पहले ओवर की समाप्ति पर 14 रन बने हैं. पहली गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेल दिया है. आवेश वहां पर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आया इस गेंद के ऊपर. इस 1 रन की मदद से स्कोर 15 रनों पर जा पहुंचा है. धावसंख्या 15 आपल्याला पाहायला मिळतात. दुसरं षटक घेऊन आलेलं आहे गोलंदाज अक्षय आणि त्याच्या पहिल्याच चेंडूचा सामना केला तर तो मोनित जोशी यांनी. मोनित जोशी यांनी आपलं अकाउंट ओपन केलेलं एकेरी धावेने. अक्षय इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज सूरज मात्रे. इस बार दूर से खेला, वहां पर देखना है बल्ले का भारी सिरा लगता हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ एक बार फिर से वहां पर सूरज के बल्ले से. इस बार शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, वहाँ बल्लेबाज सूरज मात्रे ने. 1 ही रन आएगा इस बार. इस 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ. दूसरे ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद गावदेवी ओली 20 रन. जो टारगेट है गावदेवी ओली के सामने वो 41 रनों का टारगेट है. आणि योग्य पाठलागी केला जातोय. जर एक फलंदाज बाद झाला असला तरी
सूरज एका बाजूने चांगली फलंदाजी करतोय. इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज मोनिश ने. अच्छी गेंद इस बार रही अक्षय की, विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई डॉट गेंद होती हुई. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलकर 20 धावा आणि अजूनही 21 धावांची आवश्यकता आहे. जी बिल्कुल, अभी भी यहाँ से 21 रन और चाहिए, जबकि इस ओवर की कुछ गेंदें और आने वाली 12 गेंदें. एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ जहाँ पर हम देख रहे सूरज इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे, 19 रन बनाकर खेल रहे. 6 गेंदों का सामना. अक्षय एक बार फिर से सामना करेंगे मोनिश का. इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहाँ पर पैरों के सामने खेल दिया. इस गेंद को मिड विकेट की में वहाँ पर खिलाड़ी है, उसी बीच 1 रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर. एका धावेने धावसंख्याकडून झालेली ती 21 धावा, इथून 20 धावांची आवश्यकता. चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय. नेट टू नेट फाईट दिली जात आहे, कारण जी धावांची आवश्यक सरासरी होती ती लक्षात घेता जे लक्ष्य आहे त्याप्रमाणे फलंदाजी केली जाते. इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, बहुत पहले ही घूम गए थे सूरज. लेग बाय के रूप में 1 रन इस गेंद के ऊपर. स्कोर जा पहुंचा है 22 पर. ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 22. अब यहाँ से 12 गेंदें और 19 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. अगदी बरोबर, जी सरासरी आवश्यक होती त्या सरासरी राखलेले आणि चांगल्या स्थितीमध्ये तर म्हणू शकू आपण ना, कारण एकच फक्त फलंदाज बाद झालेला आहे. 12 चेंडूमध्ये धावफलकावर 22 धावा, 11च्या सरासरीने प्रतिषटकांपैकी धावा झळकलेल्या आहेत आणि येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये अजून 19 धावांची आवश्यकता आहे. तर काय होईल आणि काय नाही हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये सज्ज होतात कुणाल दाते सर आणि सिद्दीक बाबे सर. थँक्यू. सुभाष जोमण आणि वझर खान आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा जुळत आहेत. व्हॉइस ऑफ ठाणे मिस्टर सिद्दीक बाबे सर, वेलकम. आपलं सहर्ष स्वागत. यस, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद शुभात धुमाल. भूल जाए तो इंसान भूलता है. मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना. भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाते रहना. वा, 12 बॉल आणि 19 रनची आवश्यकता आहे या मॅचमध्ये. टीम गावदेवी ओवळीला सामना जिंकण्यासाठी सोनादेवी टेमघरच्या विरुद्ध. यानंतर विकी स्पोर्ट्स चाविंद्र आणि जय मसोबा पिंपळास या 2 टीमच्या दरम्यान मॅच आहे. देखिए कुणाल, सोनादेवी टेमगढ़ ने मैच को बनाया. माना कि दिन की रोशनी में एक बहुत बड़ा टोटल नहीं था. जो इनिशियल ओवर्स थे उनमें उनके गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. अब फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर किशन मात्रे को लगाया गया है. किशन मात्रे सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका असेल आता या ओव्हरच्या दरम्यान. त्याची 12 बॉलमध्ये 19 रन विरोधी टीमला करायचे आहेत आणि या डिफेंड करण्याची जबाबदारी या ओव्हरवर जास्त आहे आणि ती जबाबदारी खांद्यावर पेलत असताना किशनला खूप चांगली बॉलिंग करणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन खेळतोय सूरज मात्रे. सूरजसाठी हा बॉल ऑन साईडला दिशा दिली आहे. स्क्वेअर लेगला डीपमध्ये फिल्डर आहेत. 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते. सूरजकडून सिंगलच मिळेल आणि आता 11 बॉलचा खेळ शिल्लक असताना या मॅचमध्ये रन करायचे आहेत 18. Yes, sharp incoming delivery and control pulley stroke, all on the ground to deep mid wicket, and with the stroke batsman through for 1. Neck to net fight going on. You are watching cut to cut match in Super से ऊपर India show. आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2020 and 21. Welcome all of you wherever you are from Altaf Bali and Pioneer Sport. The match between Oli and Sona Devi Temgar. 11 बॉल आणि 18 रन. थोडासा शॉट ऑफ गुड लेंथ होता परंतु लाईन थोडीशी खराब होती. अंपायरचं मत येते वाईड बॉलचा इशारा इथे आलाय. दबाव थोडासा कमी केला बॅट्समन वरचा या वाईड बॉलने. किशनच्या मागच्या मॅचमध्ये देखील 2 विकेट्स घेतल्या होत्या किशनने ग्रामीण गटातून खेळत असताना.
यावेळेला फटका चांगला आहे ऑन साइडला स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे झेल पकडला जाईल बैट्समैन आउट. देखिए कुणाल, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटे टोटल पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा. 41 का लक्ष्य था. हालांकि गावदेवी ओली एक बड़ा नाम है और एक से बढ़कर एक बैट्समैन है. सूरज मात्रे अभी भी वहाँ बल्लेबाजी कर रहे हैं जो दीवार बने हुए हैं. ये जब तक खड़े रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैच अभी भी 50-50. 10 बॉलमध्ये 17 रन करायचे त्यामुळे मॅच अजूनही बरोबरीत आहे. दोलायमान अवस्थेमध्ये हा सामना सुरू आहे. सूरजवर पूर्णपणे दारोमदार असेल सूरज मात्रे. आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून 2 षटकार आणि 1 चौकार आला आणि त्याच्याबरोबर सूरज थळे आणि सूरज मात्रे हे 2 बॅट्समन आता मैदानामध्ये आहेत. 10 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 10 बॉलमध्ये 17 रनची आवश्यकता. तुम्ही पाहताय बाली ट्रॉफी मधला हा ग्रामीण गटातला सामना जिथे ओवळीचा संघ खेळताना दिसेल टेमघरच्या विरुद्ध. फुलर लेनचा बॉल होता, बीट केलं, वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता सूरज थळेचा. बीट करून जातोय बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. चांगली कामगिरी किशनची. दबाव वाढतोय आता ओवळी संघावर. ये देखिए गेंद टिप्पा खाने के बाद काफ़ी नीचे रही थी कुणाल, और अधिकांश बार हमने देखा है कि एक स्पॉट ऐसा है जिसपे गेंद पिच होती है तो नीचे रहती. अगदी बरोबर आहे. सबमरीन डिलिव्हरी पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा खाली राहिला पानबुडीच्या सारखाच हा बॉल आणि त्याचमुळे बीट केलं बॅट्समन सूरज थळेला. समीकरण बदललंय. 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 9 बॉलमध्ये 17 रन करायचे आहेत गावदेवी ओवळीला हा सामना जिंकण्यासाठी. ऑन साइडला आता प्रोटेक्शन वाढवलंय. लॉंग लेगला फिल्डर ठेवलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे. मिड विकेट आहे. काऊ कॉर्नरला एक फिल्डर आहे आणि एक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर लॉंग ऑन. अगदी स्ट्रेटिश. यावेळेला फटका चांगला आहे. प्रॉपर टायमिंग. बॉल चाललाय काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सूरज थळेच्या बॅटमधून येतोय बाली ट्रॉफी षटकार. आई थिंक कुणाल, सूरज मात्रे वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर इज, बट दिस स्ट्रोक हिट बाय सूरज थले high in the air, clear the long on into the stand as well. इसका मतलब है ये जो 2 बल्लेबाज हैं, अब ये बल्लेबाज कुछ भी कर सकते हैं. मैच एक ऐसे मोड़ पे आया है. देखिए किशन मात्रे तेज़ गेंदबाज है, हवाएं चल रही है, और आप अगर तेज़ गेंदबाज हैं और बल्ले के नीचे डालेंगे तो नतीजा यही रहेगा. 8 बॉल आणि आता 11 रन करायचे आहेत. आणखीन एक मोठा फटका. यावेळेला उंची जास्त आहे, लांबी कमी असं चित्र. मैदानाच्या आतमध्ये बॉल आहे आणि आउट होईल सूरज थळे. बॅक टू द पॅव्हिलियन. 7 बॉलमध्ये पुन्हा एकदा 11 रनची आवश्यकता. कहानी में ट्विस्ट. बिल्कुल मैं तारीफ करूंगा उस फील्डर की, तेजस की, जिसने इस कैच को पकड़ा है. इतना आसान नहीं रहता है. गेंद इतनी ऊपर से आई हो और जब तेज़ हवाएं बहती है तो गेंद हवा में हलती आती है. और ये देखिए बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज उनका और बेहतरीन कैच. खूप चांगलं बॉडी बॅलन्स आणि त्याचबरोबर खूप चांगला झेल तिथे तेजसच्या माध्यमातून पकडण्यात आला आणि ते बॅट्समन आउट होतोय सूरज थळे. आता 7 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 7 बॉलमध्ये 11 रनची आवश्यकता आहे. नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये येत असताना सुशांत पाटील आणि आता त्याला साथ द्यायची आहे सूरज मात्रेची. यस कुणाल, चित्र कुछ ऐसा है कि जिसे कहते हैं ना क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन जब तक सूरज मात्रे रहेंगे, द वॉल बिटवीन विक्ट्री एंड सोना देवी, द वॉल इज टेरिफिक सूरज मात्रे. अगदी बरोबर आहे. भिंतीसारखा तो आतापर्यंत खेळला या टीमच्या दरम्यान आणि पराभवातला आणि विजयातला अंतर म्हणजे सूरज मात्रे असेल या मॅचमध्ये. यावेळेला चांगली बॉलिंग किशनच्या माध्यमातून आतमध्ये येणारा बॉल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला थ्रोच केलेला नाहीये कारण बॅकअप नव्हतं. अंपायरचा सिग्नल येतो. बॅटला ब्रश झालाय बॉल, त्यामुळे 1 रन इथे मिळेल सूरज मात्रेला. या सिंगलने तो स्ट्राईक ठेवेल स्वतःकडे आणि शेवटच्या ओव्हरमध्ये 6 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत गावदेवी ओळी या टीमला मॅच जिंकण्यासाठी. 6 बॉल आणि 10 रन. इसका मतलब है 10 का दम. अब 6 गेंदे और 10 रन. व्हाट अ मैच यू आर वॉचिंग बिटवीन गावदेवी ओली एंड सोना देवी टेमघर. क्या मुकाबला हो रहा है. 41 रनच्या मॅचमध्ये एवढा चांगला संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळाला आणि खऱ्या अर्थाने कौतुक व्हायला पाहिजे सोनादेवी टेमघरच्या बॉलरचं. खूप चांगली बॉलिंग
इथे पाहायला मिळाली आणि बॉलची मागणी होते, अंपायरने त्याची पूर्तता करावी. अगला मुकाबला विवेक पाटिल फैम टीम विकी स्पोर्ट चाविंद्रा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. जय मसोबा पिंपलास को बल्लेबाजी की दावत दी. तर 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. या मॅचकडे आपण वळूया. 6 बॉलमध्ये 10 रनची आवश्यकता आहे. अगदी नेट टू नेट आणि हेड टू हेड फाईट तुम्ही पाहताय बाली ट्रॉफीच्या दरम्यान, ग्रामीण गटातल्या या मॅचच्या दरम्यान आपण पाहतोय. सोनादेवी टेमघर या टीमचं कौतुक याच्यासाठी व्हायला पाहिजे की 41 रनचं लक्ष्य तसं पाहिलं तर 4 ओव्हरमध्ये सोपं मानलं जातं परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये, आणि ते देखील सकाळच्या सत्रामध्ये, दुपारच्या सत्रामध्ये. परंतु तेच लक्ष्य थोडंसं छोटा सा कठीण, सवाल है आपके लिए. परंतु तेच लक्ष थोडंसं कठीण करण्याचा प्रयत्न इथे केलाय सोनादेवी टेमघरच्या सर्वच बॉलर्सनी. एक छोटा सा सवाल है कि इसमें 4 फॉर्मेट का आप क्रिकेट देख रहे हैं, तो ये फीलिंग्स कैसी आती है? अधिकांश बार आपके तरफ जो टूर्नामेंट रहते हैं वो एक गांव एक गट रहते हैं या ओपन रहते हैं? नाही, खऱ्या अर्थाने पाहिलं ग्रामीणचं क्रिकेट भरपूर वेगळं आहे, खुल्या गटातलं क्रिकेट वेगळं आहे. परंतु मी ज्या वेळेला भिवंडी क्रिकेटमध्ये कॉमेंट्री करण्यासाठी येतो त्यावेळेला BC4 फॉर्मॅट हे एक वेगळं क्रिकेट पाहायला मिळतं. आपण पाहतो एक वेगवेगळ्या गावातले प्लेयर एका टीममध्ये येतात, एका फ्रँचायझीच्या अंतर्गत ते खेळताना दिसतात आणि खूप चांगलं क्रिकेट त्यांच्याकडून पाहायला मिळतं. परंतु सध्या ग्रामीणची लढत आपण पाहतोय जिथे 6 बॉलमध्ये रन करायचे 10 गावदेवी ओवळी या टीमला सोनादेवी टेमघरच्या विरुद्ध. पहिला बॉल लोअर फुल टॉस होता, ऑन साइडला फटका आहे, क्लिअर केलाय बाउंड्री लाईनला, बॉल सीमा पार, बाली ट्रॉफी षटकार बॅट्समन सूरज म्हात्रेच्या बॅटमधून, जो भिंतीसारखा आतापर्यंत विजय आणि पराभवामध्ये उभा होता. 4 रनची आवश्यकता आहे. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक, 4 रन करायचे आहेत मॅच जिंकण्यासाठी. 5 बॉल 4 रन. 5 बॉल मध्ये 4 रन. अभी अभी मैंने कहा था कि देयर इज अ वॉल बिटवीन विक्ट्री एंड सोनादेवी टेमघर. ये वो दीवार है जिसको गिराने में सोनादेवी के गेंदबाज सफल नहीं हुए. और अभी भी हालांकि मैच ऐसा नहीं कि मैच पूरी तरह खत्म हुआ हो, लेकिन गेंदे ज़्यादा है और रन कम है. 5 गेंदे 4 रन. सूरज मात्रे कितने पे बल्लेबाजी करें? 3 सिक्सर लगा चुके हैं 20, 24, 27 पे. 10 बॉलमध्ये 27 रनची खेळी केली आतापर्यंत सूरज म्हात्रेने. 270चा त्याचा बॅटिंग स्ट्राईक रेट राहिला आहे आणि खूप महत्त्वाचा स्ट्राईक रेट मी मानेन या मॅचच्या दरम्यान, कारण नेट टू नेट फाईट होती. पाहूया, हा बॉल मागे खेळलाय शॉर्ट फाईन लेगला, बॉल ट्रॅव्हल होतोय आणि तोपर्यंत अंपायरचा इशारा येतोय 22च्या स्वरूपामध्ये 1 रन मिळेल. आणि रिव्ह्यू घेण्यात आलेला आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या माध्यमातून. थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की है. अल्ट्रा स्लो मोशन.
इट्स हॅलो इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. योग्य बॉल होता, फेअर डिलिव्हरी. अंपायरचं जे मत होतं तोच डिसिजन कायम असेल आणि ते रिव्ह्यू गमावला आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमने. त्यामुळे आता मॅचमध्ये बॉल शिल्लक आहेत 4 आणि 4 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 3. 4 बॉल 3 रन. 2 बॉलमध्ये 7 आलेत. 10 रनचं लक्ष होतं. 4 बॉल 3 रन. फटका ऑन साईडला पाठवलाय. डीपमध्ये फिल्डर आहेत, मिड विकेटवरून येत आहेत भरपूर वेगाने बॉलवर. तोपर्यंत 1 रन मिळताना दिसते. सूरज मात्रेकडे स्ट्राईक आली आहे. ही जमेची बाजू टीम गावदेवी ओवळीची. परंतु कौतुक व्हायला पाहिजे सोनादेवी टेमघरचं आणि त्यांच्या बॉलर्सचं. ते लढताना दिसलेत. त्यांनी हार मानलेली नाही आहे. 41 रनचं जरी लक्ष असेल तरी आम्ही संघर्ष करणार, शेवटपर्यंत आम्ही लढणार. हेच तर खऱ्या अर्थाने ग्रामीण क्रिकेट आहे मित्रांनो. आणि तेच इथे दाखवत असताना सोनादेवी टेमघरचे हे सर्वच खेळाडू. बॉल आता शिल्लक आहे 3 आणि 3 बॉलमध्ये रन करायचे. सामना जिंकण्यासाठी 2. देखिए 3 गेंदे 2 रन. सूरज मात्रे दीवार बने हुए हैं सोना देवी के सामने. पुन्हा एकदा बॉलर तयार. आवेशचा चांगला बॉल. फ्रंट फुटवर येऊन हलक्या हाताने फक्त पंच करायचा होता, ड्राईव्ह करायचा होता. बीट केलं जाते बॅट्समॅन सूरजला. पुन्हा एकदा मॅचमध्ये ट्विस्ट आलाय. आता हृदयाची धडधड वाढताना दिसते दोन्ही टीमची. अंगावर शहारे येतात दोन्ही टीमच्या समर्थकांच्या. कारण या मॅचमध्ये 2 बॉलमध्ये 2 रनची आवश्यकता आहे टीम गावदेवी ओवळीला सोनादेवी टेमघरच्या विरुद्ध खेळत असताना. क्या गेंद थी, पूरी तरह से स्ट्रेट बैट्समैन को खोल के रख दिया था. 2 गेंदे 2 रन. व्हाट अ मैच, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स. सिंगल की वैल्यू अब मालूम पड़ रही होंगी हर एक को. खूप महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये आता एका रनची किंमत समजायला लागली आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सूरज असेल स्ट्रायकिंग एंडला. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. मागे बॉल येतोय. फिल्डिंग चांगली होते. बॉल हातातून निसटलाय. 1 रन कंप्लीट केली जाते आणि 22चा इशारा त्या अंपायरनी केला आहे. त्यामुळे स्कोर लेवल. आणि आता इथे जर मॅच टाय झाली तर खेळवली जाईल सुपर ओव्हर. क्या कहना है आपका. सुपर से ऊपर मुकाबले में हर कुछ हुआ है, सब कुछ हो चुका है सुपर से ऊपर शो में, लेकिन सुपर ओवर नहीं हुआ है. हालांकि मुकाबला तो सुपर से ऊपर हो रहा है. 1 गेंद 1 रन. 1 फॉर दी ऑल एंड ऑल फॉर दी 1 टेनिस क्रिकेट में बन गया है. ये वो 1 रन है जिसकी कीमत अब मालूम पड़ रही है तमाम टीमों को. अगदी बरोबर आहे. 1 रनची आवश्यकता. टीम मिटिंग जास्त घेऊ नका. 1 रन इथे करायचं आहे. आता इथून टीम गावदेवी ओवळी तर हारू शकत नाही. आणि दुसऱ्या बाजूला जर आपण संभावना पाहिली तर मॅच टाय होऊ शकते. सोनादेवी टेमघर संघ इथे मॅच टाय करू शकतो. एक तर तुम्हाला डॉट बॉल टाकायचा आहे किंवा विकेट घ्यायची आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावा लागेल. शेवटचा बॉल, दोन्ही टीमचं भवितव्य ठरवणारा बॉल. या मॅचच्या दरम्यान कुठला संघ खेळेल पुढच्या फेरीमध्ये, कुठला संघ टाटा बाय बाय करेल बाली ट्रॉफीला, या मॅचमध्ये आपण पाहणार आहोत. आणि शेवटच्या बॉलवर आता 1 रनची आवश्यकता आहे टीम गावदेवी ओवळी. आणि स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन आहेत सुशांत पाटील. नाव सुशांत आहे परंतु शांत बॅटिंग चालणार नाही. कारण 1 रन केली तर जल्लोष होईल विजयाचा. आणि इथे जर डॉट बॉल किंवा विकेट आली तर मात्र जल्लोष होईल आणि त्यानंतर सुपर ओव्हर खेळवली जाईल. दोन्ही टीम खूप चांगल्या पद्धतीने लढल्यात. मॅच आवडली असेल तर दोन्ही टीमसाठी टाळ्या व्हायला काही हरकत नाही आहे. खूप चांगली मॅच, प्रेक्षकांच्या समोर पैसा वसूल मॅच आपल्यासमोर रंगत असताना. 1 बॉल 1 रनची आवश्यकता. बॉलर आवेश पाटील आणि त्याच्या समोर आहे बॅट्समन सुशांत पाटील. क्षेत्ररक्षक पहा भरपूर जवळ बोलवले गेलेत. शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला एक फिल्डर ठेवण्यात आला आहे. शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे. सिली कव्हर पॉईंट आहे. फॉरवर्ड शॉर्ट लेग ठेवण्यात आला आहे. सिली मिड ऑफ, सिली मिड ऑन, शॉर्ट कव्हर 30 सर्कलच्या आतमध्ये. शेवटचा बॉल शिल्लक. 1 रनची आवश्यकता. तुम्ही पाहताय बाली ट्रॉफी 2021 मधली रंगतदार लढत. आणि या बॉलवर जर विजय मिळवायचा असेल तर 1 रन काढावी लागेल. अन्यथा मॅच टाय झाली तर सुपर ओव्हरमध्ये मॅच खेळवली जाईल. गावदेवी ओवळीच्या विरुद्ध सोनादेवी टेमघर अशी लढत रंगत असताना खूप महत्त्वाचा सामना महत्त्वाच्या मोडवर येऊन पोहोचलाय. शेवटचा बॉल शिल्लक असताना बॉलिंग मार्कवर आहे आवेश. स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय बॅट्समन सुशांत पाटील. लास्ट बॉल या मॅचचा.
एज आणि मात्र बॉल मागे चाललाय, भरपूर वेगाने एक रन इथे कंप्लीट केली. सामना मात्र संपलाय. स्लिप मध्ये एकही खेळाडू नव्हता आणि अखेर विजय मिळवला शेवटच्या बॉलवर गावदेवी ओवळी या टीमने. हॅडलक टीम सोनादेवी टेमघर, परंतु तुम्ही खूप चांगले खेळलेत. आज जरी तुम्ही हारले असाल तरी मात्र तुमच्या पराभवाची चर्चा होईल, कारण तुम्ही लढताना दिसले. लगेचच जाऊया आमच्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. तिथे जुळताना दिसतील व्हॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पंड्या आणि त्यांच्याचबरोबर को अँकर आमच्या रेश्मा मयेकर. इट्स ओव्हर टू यू. थँक्यू. थँक्यू सो मच कुणाल दत्ते सर अँड टीम. सो नमस्कार सगळ्यांना, शुभ संध्याकाळ. अगदी चाय पिताना जी मजा असायला पाहिजे क्रिकेटमध्ये, असा रंगतदार पैसा वसूल ब्लॉकबस्टर हिट सामना आपण पाहिला आणि शेवटी ओवळी संघाने बाजी मारलेली आहे. ते बोलतात ना, जो जीता वही सिकंदर. ओवळी संघ बनलेला आहे विजेता आणि प्रेझेंटेशनकडे आपण वळणारच आहोत. पण त्याआधी आपण करणार आहोत आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना थँक्यू, कारण ते आहेत म्हणून आपण आहोत आणि बाली ट्रॉफी 2021 आहे. चला तर सगळ्यात आधी थँक्यू बोलूया कपिल पाटील फाउंडेशन, माननीय खासदार श्री कपिल पाटील साहेब, देवेश पाटील, सुमित पाटील आणि सिद्धेश पाटील ज्यांनी सगळे ड्रेस स्पॉन्सर केलेले आहेत. ए भारत गॅस, कुक फूड, सर्व लव, जावेद दळवी आणि अस्फर बोलिन्सकर साहेब ज्यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅचचे गिफ्ट हॅम्पर स्पॉन्सर आहेत. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे साहेब, वीरेंद्र चोरगे आणि विराज चोरगे. ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड मिथ फाउंडेशन, महेश दादा चौगुले, आपले सगळ्यांचे लाडके आमदार. फर्स्ट प्राइज ग्रामीणचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. बी क्रीमी, खुर्शीद फारीद आणि सैफ अन्सारी. प्रेझेंटेशन बॉक्स जिथे आम्ही सध्या उभे आहोत ते स्पॉन्सर केलेलं आहे. मांगीलाल पालीवाल साहेब, मनी ट्रीज रिसर्च अँड इन्व्हेस्टमेंट, मॅजिक बॉक्स आणि सेकंड प्राइज सिटी स्पॉन्सर. ताज गार्डन, अली अहमद, प्रेझेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर. HVPL डायरेक्टर आहेत मक्की पटेल आणि शाफिक भाई. फर्स्ट प्राइज सिटी स्पॉन्सर. ॲक्रिलिक आर्ट 2चे पल्लनबाई ज्यांनी मार्बलच्या ट्रॉफीज स्पॉन्सर केलेल्या आहेत. पूर्वा कन्स्ट्रक्शन, पूर्वा रवी सावंत ज्यांनी मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर केलेला आहे. बर्फानी बाबा, पद्माकर दादा चौधरी ज्यांनी मॅन ऑफ दी सिरीज सिटी बाईक स्पॉन्सर केलेली आहे. 70-70 स्पोर्ट्स, तारीफ सय्यद, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. योगेश कुमार अँड कंपनी, बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. तेजस पाटील, 40+ फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर. रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, तारिक रईस. सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर. फरहान पटेल, महापोली, प्लेयर स्टँड स्पॉन्सर. इरफान भुरे, महापोली, प्लेयर स्टँड स्पॉन्सर. RD धाबा, विनोद दादा पाटील, परफॉर्मन्स ऑफ द डे स्पॉन्सर. 10 बायसिकल्स त्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत. परिणिती एंटरप्राइजेस, सतीश चौधरी, मॅन ऑफ दी सिरीज बाईक ओपन स्पॉन्सर. SK स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर साहेब ज्यांनी मॅन ऑफ दी मॅच कॅप स्पॉन्सर केलेले आहेत. सोबतच होलसेल व्यापारी सुद्धा आहेत बॅटचे. आजच संपर्क साधा. SK स्पोर्ट्स महापोली. O2 लाईफ ड्रिंकिंग वॉटर, फयाज अन्सारी आणि शाहिद पापा. डी सकारिया, चेतन सकारिया आणि सादिक शेख. शेरवाणीचं एकमेव ठिकाण, लाहोटी कंपाऊंड, डी सकारिया. SK एंटरप्राइजेस, शुमाईल सुसे, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. जॉली डिझायनर हरीश शेट्टी अँड विजय शेट्टी, मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर. डिझायनरच्या दुनियामधलं अनोखं नाव जॉली डिझायनर. अब्दुल रहमान जयरुमी, दी यंगेस्ट मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर. थँक्यू सो मच. मंगीलाल पालीवाल साहेब, अनिल गायकवाड साहेब, सुजित ढोळे उर्फ पप्या आणि पराग पाठोळे जे देवा फाउंडेशनचे आहेत, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रॉयल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, रोशन बाग, इरफान हदीस अन्सारी साहेब. सोबतच माननीय श्री सुरेश दादा गोपीनाथ म्हात्रे उर्फ आपल्या सगळ्यांचे लाडके बाळा मामा आणि सुमित कुमार अँड कंपनी, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. गोरी फॉर्म सेंटर, महबूब गोरी, वीरेन एंड धीरेन ठाकरे, सुभाष ठाकरे, BCA ग्रामीण जिन्होंने 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर किए लास्ट डे के लिए. RK फ्रीट, MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी, ग्यासुद्दीन शेख. परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 15 बैट उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं. देखिए, रिवर्स स्वीप हो या फिर हो स्विच हिट, अगर हाथ में है RK फ्री हिट तो आपका क्रिकेट है सुपर हिट. ताज़ा किचन, ताबिर जयरूमी जिन्होंने डिस्काउंट वाउचर स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ द मैच के लिए. तनिष्का आनंद नायडू जिन्होंने 5 बाइसिकल स्पॉन्सर किए परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए. जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फ्लोरे जिन्होंने 6 फैंसी प्राइज आखिरी दिन के लिए स्पॉन्सर किए. गैलेक्सी मोटर, पापाई खाड़ीपार जिन्होंने बाइक स्पॉन्सर किया है ग्रामीण क्रिकेट के मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए. फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी और अदनान अंसारी. 5 फॉर्चून रियल्टर्स हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर. मुशीर नाचन, सदात पटेल, विष्णु चंदे. भारत नुस्खाए अरेबिया, जाफर शेख. चोचा अखाड़ा, इरफान चोचा और रिजवान शेख. स्वस्थ रहने का एक ही ठिकाना,
चोचास अखाड़ा रोलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी मनसब मुल्ला टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक किट बैग जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। सिमना आरओ प्लांट मैन्युफैक्चर आसिफ शेख वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी। एवन चिकन सेंटर अतीक भाई। अमन टूर्स एंड ट्रैवल गुलाम साबिर। रुपेश यादव भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष धोले विलेज जिन्होंने शहरी क्रिकेट के लिए पहले सेमीफाइनल विजेता का इनाम स्पॉन्सर किया है। कशिफ मुरुमकर तलोली ग्रामीण क्रिकेट का पहले सेमीफाइनल का उन्होंने प्राइज स्पॉन्सर किया है। महेश सुदाम राउत सिटी क्रिकेट का दूसरे सेमीफाइनल विजेता का उन्होंने प्राइज स्पॉन्सर किया है। सुजीत नामदेव पाटिल खंडवाल एनके स्पोर्ट्स ग्रामीण क्रिकेट का दूसरा इनाम स्पॉन्सर किया है। रिजवान फक्की बिस्मिल्ला मोटर्स ORSL जूस जिन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। शेरू केटरर्स और सिद्धि इवेंट्स इनका भी बहुत शुक्रिया। पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सचं मनापासून आभार। चला आता आपण वळणार आहोत आपल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे। तो यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर ज़रार खरबे साहब, शादाब कोटकर साहब, माजिद बोबरे, अज़हर अंसारी और अकबर शेख। ये तमाम हजरात से ये गुजारिश है कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आना है। रेशमा, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ कि जब क्रिकेट की शुरुआत हुई तो हर फील्डिंग पोजीशन जो है उसको एक नाम दिया गया था, उसका एक इतिहास है। जहाँ से बॉल गई, क्योंकि बॉल वहाँ से स्लिप होता है इसलिए उसको स्लिप नाम दिया गया था। और आपने देखा कि जिस किसी ने भी वो स्लिप नाम सोचा था उसकी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि वो स्लिप से बॉल स्लिप होता हुआ निकल गया और गावदेवी ओवली ने विजय हासिल कर ली। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। देखिए हरीश सर के साथ एंकरिंग करने का यही अलग बात है, यही मज़ा है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ रेशमा जी, क्योंकि अमिताभ ने कहा है कौन बनेगा करोड़पति में, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आइए डॉक्टर ज़रार, यू लुक डैशिंग टुडे इन ब्लूटूथ गॉगल्स। यस। शादाब कोटकर हमेशा एक ज़मीनी हकीकत वाले पर्सनालिटी है और सर आपका हार्दिक स्वागत है। अज़हर अंसारी पायनियर के प्लेयर, अकबर भाई पायनियर प्लेयर, माजिद बोबरे पायनियर प्लेयर। व्हाट अ ग्रेट शो बाय पायनियर स्पोर्ट्स इन ऑर्गेनाइजिंग बाली ट्रॉफी 2021। पहला इनाम सुपर 4 जिसके हमारे पुरस्कर्ता है जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, AA भारत गैस। आइए जानते हैं सुपर 4। सुपर 4 ऑफ द मॅच गोज टू दी लुझिंग टीम। पण शेवटी बाली ट्रॉफीमध्ये जे चांगलं खेळतात त्यांनाच पारितोषिक भेटतं। विवेक पवार ज्याच्या बल्लामधून आलेले आहेत 2 शानदार बाली ट्रॉफी चौकार। शादाब कोटकर SK स्पोर्ट्स महापोली के ओनर है, उनके शुभ हाथों से ये अवार्ड दिया गया है। अब सुपर 6 की तरफ चलते हैं। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस, उन्होंने एक कलाई की घड़ी स्पॉन्सर की है। जानते हैं ये कलाई की घड़ी किसकी कलाई में बांधी जाएगी। सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू सूरज डूबा है यारो, सूरज मात्रे फ्रॉम आवळी टीम ज्यांच्या बॅट मधून आलेले आहेत 3 शानदार षटकार। डॉक्टर ज़रार खरबे, इनके दस्ते मुबारक से ये तोहफा इनायत किया गया है। आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच, जानते हैं किसे मिलने जा रहा है। मैन ऑफ द मैच गोज टू जो जलता नहीं जलाता है, वन मोर टाइम सूरज मात्रे। आइए सूरज मात्रे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। भरपूर बक्षिसं तुमची वाट पाहत आहेत। तर सुरुवात करणार आहोत आपण माजिद बोबरेकडून। जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, AA भारत गॅसचं हे बक्षीस। तदनंतर अकबर भाई यांच्या शुभ हस्ते असफर बोलिंस्कर, जावेद दलवी, AA भारत गॅस गिफ्ट टेम्पर। अझर अन्सारीकडून जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, AA भारत गॅस गिफ्ट टेम्पर। शादाब कोटकर यांच्याकडून असफर बोलिंस्कर, जावेद दळवी, AA भारत गॅस गिफ्ट टेम्पर। डॉक्टर ज़रार खरबे यांच्याकडून D साकरिया बॅग। अझर अन्सारी यांच्याकडून जॉली डिझायनरचा 20% डिस्काउंट वाउचर। अकबरबाईकडून ताज़ा किचन ताबीर जयरूमी डिस्काउंट वाउचर। शादाब पटेल SK स्पोर्ट्स महापोली टेनिस क्रिकेटचे होलसेलर आहेत, त्यांनी बाली ट्रॉफीसाठी एक कस्टमाइज्ड टोपी स्पॉन्सर केली आहे।
रेड अँड व्हाईट अँड फ्युचर इज ब्राईट. काय रंग दिसतोय तो टोपीचा. आता मी माजिद बोबरे यांना विनंती करणार आहे, अंजूरची एवन जोडी निलेश पाटील सुकेश डाकी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फळाची टोपली आणि सर्वात शेवटी अझर अन्सारी पायनियर प्लेयर यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली मार्बलची ट्रॉफी आणि जुड़ता है डॉक्टर जरार. बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का. अब आप सभी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं. थैंक यू सो मच टू ऑल आर स्पेशल गेस्ट. आणि जो जलता नहीं जलाता है सूरज, म्हणजे मला ते गाणंच आठवते, सूरज डूबा है यारो 2-4 सिक्सर मारो थोडे से रन निकालो. शेवटच्या बॉलपर्यंत मॅच रंगली होती आणि कळत नव्हतं, जरा हस रे शेवटच्या मॅच बॉलपर्यंत मॅच रंगली होती आणि कळत नव्हतं की कोण जीतेगा कोण हारेगा. शेवटी ओवळी संघाने जीत स्वतःच्या पदरात टाकलेली आहे. काय सांगायचं, शेवटच्या बॉलपर्यंत धडकाने काय बोलत होती? नक्कीच प्रेशर तर खूप होता आमच्यावर, पण सुशांतने 1 रन काढले आणि मॅच जिंकवली. शांत नाही राहिला सुशांत आणि रन्स काढत गेला. तुला जे मॅन ऑफ द मॅचचं ट्रॉफी भेटली ती तुला कोणाला डेडिकेट करायचं? ती माझ्या टीमला आणि गावकऱ्यांना डेडिकेट करायची. आज जशन होणार आहे ओवळी गावामध्ये. हो नक्कीच होईल जशन. तापमान वाढल्यावर वितळते कुल्फी. तापमान वाढल्यावर वितळते कुल्फी आणि आज सूरज मात्रे सोबत पूर्ण ओवळी गाव काढणार आहे सेल्फी, असं आपण म्हणू शकतो. सूरज, परंतु शेवटचा चेंडू तुला खेळायला भेटला नाही आणि त्यावेळेला नक्की दगदग वाढली असेल की माझा जो सहकारी आहे तो कुठल्या पद्धतीने त्या चेंडूला खेळणार. तुला फुल कॉन्फिडन्स होता की शेवटचा चेंडूवर 1 धावासाठी प्रयत्न करणार? हो कॉन्फिडन्स सर होता मला सुशांतवर की 1 रन काढून देईल तो आणि मॅच जिंकवेल आम्हाला. आणि आज तुमच्या संघाची गोलंदाजी सुद्धा चांगली झालेली आहे, तर तुमचा गोलंदाज आणि त्यांना क्षेत्ररक्षकांची भेटलेली साथ याबद्दल काय सांगू इच्छितो? नक्कीच गोलंदाजी तर खूप चांगली झाली. राजदीप, प्रेषित, जतीन, अजय, फक्त फिल्डिंगमध्ये थोडी मिसफिल्ड झाली त्याच्यामुळे 5-10 रन जरा इकडे तिकडे झाले. तर तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आहेत. असंच खेळत राहा आणि ओवळीकर तुम्ही प्रगती करत राहा. थँक्यू सो मच. तर हा होता सूरज आपल्यासोबत, मॅन ऑफ द मॅच. आणि चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या एका मोठ्या सामन्याकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू प्रेजेंटेशन बॉक्स. 1 ओवर की समाप्ति, तारीफ काबिल गेंदबाजी जयेश वकारे की विकेटों का दूसरा हैट्रिक. बाली ट्रॉफी 2021 में जयेश वकारे के नाम 2 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल की. इस वक्त पिंपलास कठिनाइयों में है, विकेटें है ज़्यादा, रन है कम. देखना है अब दूसरी ओवर के लिए किसको बुलाया जाता है. मेरा साथ निभा रहे हैं सुभाष धुमाल, कंप्यूटर कमेंटेटर. धन्यवाद स्वीट वाइस नबील देवकर सर. अब दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए